So, hello. Yeah, just checking if my voice is loud and clear. Okay, waiting for the first comment that tells me whether I'm audible or not. So that way I will proceed. Okay, so we have a few users who've dialed in. We just briefly talked about what is the idea behind how I took the position and how I will be managing it today. So let me just make sure I have everything in place. Just one more minute and then we'll start. Okay, so we'll quickly show how I started the day. Right, so at the start of the day, I was just checking what the premiums were, and then I took a position, a quite skewed position. So right here at 9:15:24, the put was around 26 and call were around 13. So I started with a strangle, and I booked some positions roughly around right here around 11 o'clock. Right, so I squared off my position. At that point of time, my profit was around 88,000. I took a re-entry a few minutes right before coming live. Right, so this is the entry at 11:38, where I took an entry using the custom rule, where I said when the combined premium is greater than 56, 57, 58, I took 600 quantity with add hedges of 500 points. Right, so right after that, the market moved, and my puts actually went 24,400. So that's the 24,400 from 1989 rupees. It went to 50. Right? So that's the adjustment that happened after I took the position, because the market moved suddenly. Right? So let's look at what the chart is telling us. Right? Like this, and then we'll look at how to manage this position going forward. So far, I have two automation rules, right? One is price check and one is price difference. The price check is basically if there is a move in the down direction, then I will risk off my puts, because the puts are currently in the money. So it's an inverted triangle. So if the market continues to go down, then the puts will risk off. Most likely, we'll just uncheck the price difference for now, and we'll keep the price check only. Looking at the ATM straddle had touched 54, around 54 and change, but now it's back to 80. So, and that's when I got a better entry via the rules. This is what the P&L chart looks like. So if I have to open, so this is the entry at the morning. We were pretty much at break even from the beginning, and then roughly when I touched 90 is when I started squaring up, and I basically decided that if it goes below 90, I'm going to square off, and that's where around 88 and change we squared off. And then I was trying out something in the paper trade, and then finally we took a position right here. This is right before coming online. So as soon as we took the position, the MTM actually went all the way to 61, and then from there it's back to 90 range. So the good part was we took an entry in the spike. Right? So we only took an entry when the premiums actually spiked, and the premiums were above 56, 57, 58 on both the legs, the call and put.
So that's when I took the entry. And now this is the current position. Since my view is that it may go down from here if it reaches, so let's look at the chart once. I'll just open the chart and we'll draw some lines and then take a call from there. So this is the 1 minute chart. In this up move, the puts actually came closer, right? So I have to look at the longer time frame right now. This is the day high, and this is the day low. So the opening itself is the, let's just do this as a day low. Right, so we've had a decent recovery and then the market has been range bound. So there's a very good chance that we may go up to fill the gap. Right? So the gap down, if that happens, we will most likely create a rule so that we are protected in that scenario. Right? So what I'm going to do is I'm going to create a rule which says if it's greater than, and we'll do that on synthetic future. So we'll say this is, the current synthetic future is 1259. If it's greater than 24010, then I'm gonna exit half of my calls. Only if there's an up move, then I'm exiting half of my calls. So this is for me to protect myself in case there's a decent up move, and we have drawn a line here which is 24,000, but I'm giving myself another 10 points so that if there's a consistent move, then we will square off half of the calls. We'll keep the puts as it is. So far, the only logic that we have is price check, which basically says if the market starts going down, then the puts will go above 65. When that happens is when we will risk off the puts, because at that point of time the puts will be around 25 here and the calls will again be 25. So we will be touching that same. I've used only 45 lakhs so far. So on that we are doing an ROI of 2.16. In the morning I touched around 50-51 when I took the position, and since then we've tried to stay within that range of 50-51 lakhs. So if we consider that as well, we're still touching 2%. It's roughly 12 o'clock right now. Sure. So Aditya, so there are a lot of questions then answers, right? Honestly speaking, right? There is no guideline as such. What will happen if this? So what will be the criteria for tools like TradeFlow to basically be tagged as a white box algo, right? So we don't come under the black box algo where the strategies are fixed and there is more scrutiny on the black box side, because your strategy needs to be approved by the broker and the SEBI, right? So for us, since we don't provide any fixed strategies, it's as per the user to decide what strategy they want to deploy. Right? So it's a purely execution tool. So we may fall under the category of white box algos, okay? And there is no guidelines, right? There's only one line that says, okay, if there's an execution tool, then we need to have an algo ID. In future, if that paper comes into action and becomes a rule, then most likely we will be integrating with algo ID requirements that the SEBI has put forward, right? And then we'll have to work with brokers to basically incorporate the tool as part of the listed tools approved by SEBI. So it's still way too early for us to comment on it, whether it's going to actually get implemented or not. And if it gets implemented, then what is the criteria for tools like TradeFlow to actually be comply with the regulations, right? So we will eventually
comply, right? So whatever is the requirement, we will be able to satisfy all those requirements. So I don't see any problem. I actually see it's going to be easier for us because we have matured a lot in terms of infrastructure, in terms of capabilities, in terms of a lot more things that SEBI is looking for, at least stability of a product and so forth. So I'm actually not at all concerned about it, because if it happens, we are ready for it. Okay, so what would be the next? So calendar splits, you have to have two instances running, one on the current week and the other one. So the second instance, I can open another instance here and choose a different expiry. You won't be able to do calendars in the same instance because you are selecting an index expiry and a product type, and only those positions of that specific index expiry shows up. For calendar, you'll have to load two instances, and one instance will be of the current week and the second instance will be of whichever next expiry that you're looking for. But it's possible to open multiple instances and manage your positions from there. What I'm going to do right now is I'm going to basically create some rules and try and get some benefits on the hedging as well. So we'll see if there is 24. How much is the hedge currently for? I'm just checking the prices here. 400 is around this, and on the put side 23,500 is around 1.5, right? So we look at 550 and 600. Yeah, we'll basically say if it's less than 2 rupees, then we will bring the hedge closer. I'm trying to reduce the risk as well by bringing the hedges closer and benefiting from the margin requirement as well. Along with that, I will also create a rule. We will sell 100 count of 3 with 1 point or maybe 2 points each. That way we will get entry at 59, 61 and 63. We may eventually go away if it reaches 65, right? So this is okay. And similarly on the call side, we will create the rule for 100 quantities. I'll add more on the call side. I'll let it add 5. So, and we have add hedges. So whenever we just do a 0 and see. So let's do 2 points and add 3. 63, 68, 40. Yeah. Sorry, 36, 38, 40. This is good enough. And we'll add hedges which are 500 points away. So when we get the entry, the hedges will automatically come at that. So I don't want to take an entry right now. I want to take the entry when the price is better. So I have a few put rules and a few call rules along with the rule to take some hedges, and then I will manually square off the existing hedges. We are currently using only 45 lakhs and change out of the 2 CR. So I will go up to 51 lakhs, not more than that. The current logic is that we will only risk off if the price goes above 65. Most likely if in a downfall, if the puts go above, then we will get an entry. We'll get an adjustment. Okay. When I was talking, we got an entry at 3607. That's because of this rule right here. And the hedge also got added. So people who just joined in, right? This is the entry that I took
in the morning, and then this is the P&L chart. We started roughly around 9:15 itself, and from there we had a decent decay, and now we've taken a re-entry right before coming live, and then this is the current entry. I'm not using any P&L rules right now, but I think I should be doing it. So I'm going to set a target of, let's see what is the current value. The current value is 1.5 lakh that we can capture from if all of this goes to zero, which obviously won't because we are inverted. So most likely we're looking at roughly around roughly around 70,000. Right? So we'll put a target of 2 lakh, which is obviously on a higher side, and we'll do a trailing of 75,000. I'll just set this to, so this will automatically keep trailing. Now my trail is roughly 30,000. When my profit increases, my exit criteria will keep changing. Okay, couple of things that we are doing with the broker. The current broker that I'm working with is TradeGenie. You can see that I can see IVs here, IVs and Delta, right? So we had requested the broker to share this data for our users. So what we are getting here is we are getting live IVs which are getting updated every 15 seconds. And so you'll see that the values keep changing for the Delta and for the IVs. So these are the two columns that we will be rolling out for TradeGenie users, where they will be able to look at live IVs getting updated every 15 seconds. There is a lot more work going on with regards to Greeks, where we will have rules based on which we will be able to enter or exit positions based on Greeks. Right? So that's something that the team is working closely with the broker to roll out those changes. But if you had noticed in my previous videos, I used to go to the broker terminal to see, or to third-party tool like Sensible to look at the IVs, which I no longer have to. I can just look at the IVs getting reflected here immediately with the frequency of every 15 seconds. This is currently not live. This is currently in testing mode. I'm using a version which is currently getting tested. So if you don't see the IV and the Delta columns and you are on TradeGenie, then just wait for us to roll this feature out. We most likely will be rolling out this feature by end of this month. Any comments, any inputs on the feature, you can let us know. We will see how best we can incorporate those changes and recommendations. So we're still under the 50 lakh mark that I've put for myself. So far, ROI is pretty good. We will see. We have a rolling of 75,000. So in case there is a move and the profit goes below 31,000, then it will automatically exit. But if my profit increases, you'll see that the exit P&L keeps on coming closer and closer to the current P&L, and it tries to keep the maximum of 75,000 is what I'm willing to lose from the max profit that I've gained so far. So that's one way of protecting our profits. I'll just make it 36 again. I'll just check this checkbox again, and now I have again the same rule of entering 100 quantity at 36. Along with that, the hedges which are 500 points away will get added.
This is me just trying to capture and reducing my VAR by bringing the hedges closer. So far the IBs are under the 20 mark, so I'm not too worried for a big move to come. It's still possible, but it's just one of the criteria that I look at. So other brokers, they have to provide the data, right? So luckily TradeGenie is taking our feedback very seriously, and they are implementing the changes that we are requesting them. And not every broker is that tech savvy, and is not possible for every broker to provide all the data that we request. So since TradeGenie has kindly agreed, right, to provide that information, we are able to provide our users as well. Okay, so we got another 100 then at 38, and if it goes to 40, so we are trying to enter in spikes, right? So now I'll be touching the 50 lakh mark, so we will not be entering more. We'll see if we can enter. We'll create these rules again. This time the rule will say let's do at 52 and 54, not before. So that my position is also balanced. I want to make sure that I don't take unwanted risk. Okay, so now we got another one at roughly 40. So that way we are now touching the 50 lakh mark. I'm okay to take another 200 quantity on the put side just to balance out the positions. So if your broker is not yet integrated with us, we need to only onboard once the broker approves, right? So you can request your broker to integrate with TradeFlow, and then we can work on integrating it. Right? So we usually would wait for an approval from the broker to come in and before we start working on it, especially because of the new changes that are coming in, the new guidelines and stuff like that. So if you are planning to switch to other broker, and if the broker doesn't have, let's say, XTS or Symphony APIs, you can request your broker to consider integrating with TradeFlow as well, and then we can take up those integration. So I've created a rule to protect the position in right here, sorry, in the spot rules. So if the synthetic future goes above 2410, then we are exiting half of our calls. This is just to protect ourselves, because we are now slightly skewed in terms of the quantity that we have for call versus put. There's a 400 quantity difference. So in case if there's a up move, I am telling that exit half of my calls if the synthetic future goes above 2410. This most likely will happen when Nifty breaks the 24,000 on the upside.
Okay, we got some hedges. Looks like. Let me just see. Yeah, we got some hedges at a better price, so I'm gonna exit the. So we are touching 51 mark. That's all. We'll wait and watch. Right now, I'll make the hedges as, yeah, I'll leave the hedges as 5. On the calls, we are not adding any more calls now. We've already added decent quantity so far. I'm gonna make this a 61 and 61. So if there's a move on either side, if the price goes above 61, we are risking off.
I'm more concerned on the down move, right? So that's why I've changed my put from 61. So earlier it was 65. We changed it to 61, 61, and then now I've changed it to 59. So the idea is if the market starts moving down, but generally if there's a down move, the premiums will actually spike. Right? So on an up move, we've seen majority of the times that the IV crash. In a down move, there's already fear. So if there's a down move, then the premiums may actually increase very suddenly, and that's why I I've kept a slight skew on the put side. I'm saying if it goes to 59. So what happens when it goes to 59? Right? The math behind this is currently it's around 44, 45. So for 59, it needs to move almost 15 points. Right? So when the put moves 15 points, the put which is adjacent, which is at 23,950, currently trading at 13, it's gonna go and close with, it's going to be close to 2021 at that point of time. So when it's close to 2021, even higher if the move is very sudden, right? At that point of times, the call on the other side would be around 30 to 28 to 30, because the calls will not give up very quickly. There is still a gap to be filled, and if that gap gets filled today, then the call writers will not be selling at cheaper. Right? So if you look historically, roughly almost all the gaps get filled on the same day, and the probability of that is almost up to 60%. So there is a good chance that that gap can get filled today itself, and in that case, I'm not willing to take chance of bringing the calls even more deep in the money, and instead we'll risk off on the put side. And that's why I don't expect the calls to decay suddenly and touch 25. There's a 15-point spike in the put side. So that's just my view, right? So I could be completely wrong and there's a certain up move, but I've protected myself by setting up the rules which are spot rules. So I've said that on a synthetic future, if the synthetic future goes about 24.10, I'm exiting half of my calls. So I may have a view, which is a directional view, which says that I'm expecting the market to go down, but I still need to protect myself in case if the market moves against my view. So a lot of people ask me, can I do directional trades here? Definitely. Right? If I square off half of my puts here, it becomes a directional bias trade where I'm bearish, right? Because I've sold more calls than puts. Or if I sell a put which is 200 points and call which is just 50 points with the same quantity, again it's a directional bet where I'm expecting the market to be bullish. Right? So it doesn't have to be a delta neutral trade. Right? I prefer doing delta neutral because I don't have enough time to study the markets on a regular basis. So for me, and I'm very comfortable with this. Right? It is giving me a decent return. So why should I deviate from something which is giving me decent returns? So if directional works for you, you can always deploy directional strategies here. If non-directional works for you, I would say you can continue doing that. There are options for both. For people who are doing swing trading, if they want to take entry only when there is a reversal, there is range breakout strategies that we have. So this is pretty much a range breakout strategy, a version of it, right? So we're saying if the range is broken on the upside, so if the resistance is breached, then I'm risking off and I'm saying square off half of my calls. Somebody else may decide to say, when it's less than 23,900, so let's say 23,900, just to give an example, right? Then exit half of my puts. So if you have a support and resistance in mind, you can always use the less than and greater than, and you can use that on spot or on synthetic future. You can even add more quantity. When, let's say, if it goes below a certain level, I want to sell more of calls. So if there's a down move and you want to sell more calls, you can do that through the spot rules. And similarly, if somebody's expecting an up move, but they only want to take a position when that up move actually happens, right? So then I would do something like 24
050, then I want to sell some puts. So when it's greater than 2450, I want to sell 1800 puts. So you have full flexibility to be a directional trader or non-directional trader. You can even do a single leg. There's no compulsion that you have to have both the legs. For a range breakout strategy, whatever is the position, it's going to exit half of the calls. So if I had 10 call options, it's going to square off 5. If I had 1000 quantity, then it's going to square off 500. Sure. So for trailing stop loss, right, what I can do is, so let's say we do an SL. Right? So if I click on SL, the stop loss comes. I do a TSL, then a trailing stop loss comes. Shows up. So let's say if my stop loss is, let's say a stop loss of, just to give you an example, 90, right? And I do a trail of 1 point. So I can basically do a stop loss of 90 with a trailing. Now the trailing is at 40. Right? So the pivot is at 40. Now if there's a 1 point decay and this goes to 39, then the trailing stop loss will happen. Right? So let's do here as 100. Right? So just to show you the functionality, I'm setting 100 and doing this here. So the pivot is at 4190 is the time when I clicked it. So if the decay happens from 4190, if it decays by a point, this 100 will become 99. Similarly, this 90 will become 89 if the spot, the premium goes to 39.10. We'll see that in action, right? So you can see, right, that from 4190 it went to 4090, and from 100 it went to 99. I can change the step. I can say the step has to be 2 points. So for every 2-point decay now the pivot is 43.45. If this goes to 41.45, which is a 2-point decay, the value from 99 will go to 97 directly. So you can create your steps and trail. For example, here again it's 89. Right? So for every 1-point decay on the call, there will be a 1-point reduction in the stop loss value. Similarly, here you can see there is a 2-point, the step is 2, so from 99 we went to 97. There's a decent decay. We saw 78, from 78 it has gone down to 62. The IVs are 9 and 19, right, on the position that we have. Obviously the one which is 24,400 is in the money, so that's why IV is slightly higher, but roughly the IV on that other leg is also around 16.
you can see that the exit PNL is now 40, right? We started with 0 all the way went to 28, 28 to 40 because my profit is increasing. So this is a way of protecting your profits in case of a reversal or in case of a big move. Either ways, right now my value is 75,000. I can change this to 500 rupees also. So for every rupee change, my exit PNL will change. So as and when my profit increases, my exit criteria is coming closer to my profit. This protects me in case of a sudden move in the market or a reversal from the view that I had. So that way I can at least say that the system will start exiting the position when the profit goes below 42,894. But I don't want to restrict on my profits, right? So that's why I've set a higher target and trailing my profits. Okay, so I'm taking a 15-minute break, but before going for a break, I'll just relook at what my settings are because I won't be in front of the system, right? So it's best to make sure that you have settings such that it can protect you in case there's a move on either direction. So what I'm going to do is since I don't generally do spot rules, I'm going to check this. So it's as easy as checking and unchecking, right? So I've unchecked this because my puts will compensate at this point of time. Even if there's a breakout, I will manage it through the puts coming closer or calls risking away. What I'm going to do is I'm going to make this as 57 and 57 only because I'm not in front of the screen, and we'll do a price difference of automatic of 40%. I will not refresh now because obviously I don't intend to do it at this point of time. My intention is when the adjustment happens. Let's say when I'm not in front of the screen and the adjustment happens, if the put goes to 57, then the new put to which I will take a position will be roughly around 19 to 20, and the call will be around 28, and 40% of that is roughly 16 to 18 points based on what price we get an entry. In that I'm comfortable with. So the intention of keeping this already at 40% with auto update is so that when the price check
gets triggered and the adjustment happens, the new value automatically gets calculated, and I'm comfortable with that new value. So you're basically thinking one step ahead. What if there's an adjustment that happens? What should be the next configuration on next setting so that you are protected in the market, right? So that's this, and I'm gonna remove the PNL. I don't want the PNL at this point of time, because the adjustment will manage itself. Yeah, that's all. So I'm stepping away for 15 minutes. We will be answering all your questions once I'm back in front of the screen. Okay, so Atulji, that's a very interesting question. Nobody can, right? If you have trade flow, you don't have trade flow. You can't safeguard yourself when there is a spike in the premiums of calls and puts both, right? But what you can do is, that's one of the signs that there's a market movement coming very soon. Usually, if you look at the data historically, if the prices of your options are increasing without major movement in the spot, then eventually what we've seen is that's a signal that there is a probability of a big move coming in. So in order to protect yourself, what you can do is you can have a rule which says, so in this position I'm not at a straddle, but still what I can do is I can create a rule here which basically says that if the market goes, let's say if the premium goes above 120, I'm just giving an example here, then I'm going to exit all my position. Now, most likely 120 is a very high value as of now, but if I have to set this, I would set this at 55 or 60. So if the premiums are increasing and premiums are above 60 for the same position, even when the market moves, the straddle, ATM straddle is changing, right, along with the market. But the combined premium was 46. From 46, if it going to 60 or 70, right? So let's say if I do 60, then that's a sign that there is a high probability of a move coming in very soon. Then I would exit my positions. So before the actual spike comes in, it's best to protect your position and then re-enter, because you can always enter with this same rule. Once I've exited, I can say when it's greater than 90, then I want to sell 1800 quantity. I would prefer doing this. So they can exit before a big up move comes in or big IV spike comes in, and then re-enter at a better price. Is what I would say trade flow can protect you using this strategy. Let's say if I have to do this on the existing position and I don't want to do it on an ATM strategy, I can use a custom rule. A custom rule gives me all that flexibility. Let me just clear this up. So I can say this is at 31 and this is at 400, right? So currently it's trading at 78, but if it goes above 85, 82, I want to exit all my positions. So I can exit all the legs, or I can have a rule which says greater than this, then I want to, let's say 85. Then I can also do a buy. How much quantity do I have? Let's say I want to do a buy of 1800. So it will square off 1800 because it's a buy order for both the legs. Let me just... So you get an idea, right? You have an exit option, or I can buy back 1800 quantity of both when the premium is greater than 82 or 85. So that way, on the existing leg combination, when there is a premium spike, you can exit the position and look at re-entry options at a better price. I hope that answers your question. Let me know, Atulji, if that is something which helps answer your question. Also, one humble request: if you are currently watching this and if you haven't subscribed, you'll notice that we have started publishing a lot of videos now on a daily basis, which talks about different features, different use cases around how to manage your positions using TradeFlow. So do subscribe and do support us by liking and sharing this video. If you are liking the content that we're sharing, and if you would like us to come live regularly, please do share and comment as much as possible. Thank you. Okay, I am now taking the break, so this is being removed and I will say taking a break now.
was just reviewing before I step away because it's hard-earned money. We don't want to lose it. So I reviewed all of it and now going on a break. Finally.
in front of the screen again. So let's look at what is happening so far. ROI is pretty good, right? I am thinking of exiting some of the positions now. So if it goes to 39, it's less than, then we'll exit hedges as well. So if it goes below 39, we'll take an exit, because so the reason is you can see the calls have decayed quite a lot, and ATM. So if I have to take a strangle, there are only 24 points. So for 24 points, should I stay in the market? It's roughly one. So there is almost 2.5 hours left. So we can take an entry again when there's a spike. Let's make it 40. And we'll exit half. So this is, we're trying to protect our profits as well. So end of the day, it's make sure we are profitable. So most likely we will cut our position by half now, because there's only 40 points left in the straddle. What if there's a sudden move, right? So trying to see if we can then enter again at a better prices. The risk reward is telling me that it's best to book some and then take a re-entry. So if it goes to 45 also, then I will exit half. So the condition is both sides, right? So if the premiums go above 45 on the ATM strategy, then we'll exit half. And right now we're trying to book half if it goes below 40. So there's still a lot of time left in the market. I'll wait for one more minute. If that doesn't happen, then we'll make from 40 to 41. Change this to 41. Okay, changing this to 41. It's going to 40.
5. Okay, so half quantity got squared off. That way we captured, we've tried to protect some of it, and we'll in exit half when it goes to below 40. So half of half, right? So we have small quantity left, and then we will create some routes and we'll try and take more positions through those routes. Yes, you can, right? So you can always do uh, so yes, I am using ATM strategy. So all I'm telling is exit half of the quantity. So whatever is the quantity that I'm currently trading, it's going to exit half. So initially it exited half along with the hedges. Now I'm saying exit the remaining half. So half of what is left. At that point of time, whatever is the quantity, it'll calculate half of that and exit half of that quantity. So it's not going to exit my ATM. I'm saying exit half of the actual quantity that I have. Same goes for here, right? So I can exit all sold, all buy, all PE, all CE, right? So there is a lot of flexibility in terms of what I want to exit, and that way I'm protected, right? So one question was there, I'm gonna actually show that. That's I'm gonna make this as 45. If it goes above 45, then I'm exiting half. So this way, there was a question by Atulji where if spot doesn't move and still premiums are increasing, then how can I protect ourselves? So this will protect, this will basically exit half of the quantity if the combined premium goes above 45. And just an FYI, this is currently on spot. We are working on enabling this for synthetic future. So instead of working on spot, the list will then be on synthetic futures. So to benefit from spikes, now what I can do is I'm sitting at 29 and 45 minutes, which is around 74. I can say when it's greater than 80 is when I want to sell 600 quantity. So this gives me an option to enter at a better price, which I'm saying if it goes to 80, then sell 600 quantity. So both are very different. One is when there's a spike, most likely the impact will be on the ATMs, and the ATMs, if the ATMs currently which is trading at combined premium of 41, if it touches 45, it's going to square off half of my quantity. Along with that, I'm saying I want to enter when there's a spike. It's a slightly contradicting, but just trying to show you that it's possible. Okay? I want to enter only when the combined premium is more than 80 for the leg that I've sold, which is 30 and 44, heading to 75. When that goes above 80 is when I am willing to sell 600 quantity. And to answer your question, I can do a limit order. So these are market protection orders, and I can set what is the limit. I'm doing market orders as of now. I'm not doing market protection orders. So when I check this checkbox, the price will be calculated for the limit order based on the percentage specified. So let's say if I'm doing 1%, then for a 100 rupee option, if I'm doing a buy order, the limit protection order will go for 101 for a buy, and for a sell will go at 99. So the percentage determines how much is the protection that I'm asking for taking that position. So you can see it here, it is slightly at 42, 43. If it goes to 45, then half of my quantity gets exited.
बिल्कुल कोशिश करूंगा मैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो इंग्लिश निकल रही है, लेकिन आई एम गोना ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में बोलने की। तो मैंने जो रूल बनाया है वो ये है कि अगर 45 रुपये 45 रुपीज़ के ऊपर गया अगर कंबाइंड प्रीमियम एटीएम का, तो मेरी आधी क्वांटिटी अपने आप कट जाए। अब वो आधी क्वांटिटी, क्वांटिटी कोई भी स्ट्राइक्स होगी, जो भी स्ट्राइक है उस स्ट्राइक में जितनी भी क्वांटिटी बेची है उनका आधा अपने आप कट जाए। तो ये मुझे हेल्प करेगा जब स्पाइक है, तो स्पाइक में मुझे पहले निकलने का, ताकि और काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है वो 45 से 50 जाए, 50 से 55 60। हमने देखा है मार्केट में कि जब मूव आता है तो मूव बढ़ता जाता है। तो इट्स पॉसिबल कि हम जल्दी निकल जाएं और फिर अच्छी एंट्री अच्छे प्राइस पे ले लें। साथ साथ में मैंने एक और रूल बनाया है, राइट, ये शायद अभी हो जाएगा, मैं स्क्रीन पे रहता हूँ। वो इस ऑप्शन के लिए बनाया है कि जो मैंने पोजीशन ले रखी है उस पोजीशन में अगर मुझे और ऐड करना है तो मुझे अभी इस रेट पे ऐड नहीं करना, मुझे ऐड करना है जब दोनों का कंबाइंड प्रीमियम 80 के ऊपर जाएगा, तब मुझे 600 क्वांटिटी बेचनी है, क्योंकि मैंने ऐड हेजेस कर रखा है 500 पॉइंट दूर का। तो जब पोजीशन आएगी अपने आप मेरे को हेजेस भी आ जाएंगे, मुझे अलग से हेज जाके पहले लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ये एंट्री मिलेगी उसी टाइम पे हेजेस भी अपने आप आ जाएंगे। और मैंने एग्जिट हेजेस कर रखा है, तो जब हाफ कटेगा तो हेजेस भी कट जाएंगे। तो ये बहुत इजी ऑप्शन है मेरे पास। ये अनचेक कर दूंगा तो हेजेस नहीं कटेंगे, चेक रखूंगा तो हेजेस कट जाएंगे। मैं अगर इसको अनचेक कर दूंगा तो हेजेस ऐड नहीं होंगे, अगर चेक कर दूंगा तो हेजेस ऐड होंगे। अगर मुझे 600 पॉइंट दूर के हेज लेने हैं तो मैं 600 कर दूंगा इसको। तो अब जब भी पोजीशन एंटर होगी तब अपने आप 600 पॉइंट दूर का जो जो भी पोजीशन पे मैं सोल्ड पोजीशन बना रहा हूँ उससे 600 पॉइंट दूर जो स्ट्राइक है वो एज एन हेज बाय ऑर्डर जाएगा उसका। हमने थोड़ी पोजीशन कम कर ली, उसका कारण एक ही है, क्योंकि हम बहुत अच्छे आरओआई पे बैठे हैं 2.6%। हमने रफली 51 लाख अभी तक डिप्लॉय करे थे, तो 51 लाख का हमने उस पर हमने 1.3 लाख अगर बना लिए हैं तो दैट्स अपवर्ड्स ऑफ 2.5% अभी मार्केट में। तो रिस्क थोड़ा कम कर लिया। 2 बजे के बाद रफली मैं कोशिश करूँगा कि वापस से और क्वांटिटी ऐड कर लूँ, उस समय जो भी प्रीमियम होंगे उस हिसाब से। अगर मुझे पूरी क्वांटिटी काटनी है तो मैं इसको फुल कर दूंगा, मैं ऑल कर दूंगा, तो अब जितने भी हैं सबका सब कट जाएंगे। जो भी मेरी ओपन पोजीशन है सारी की सारी कट जाएंगी। मैं इसको अभी अनचेक करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए अभी 80 पे एंट्री करनी, क्योंकि अभी मार्केट में टाइम बहुत है। अभी नेक्स्ट 1-1.5 घंटे में पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो इसका कारण एक और ये है कि मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट कवरिंग आई, अगर मार्केट ने अप मूव दिया तो गैप फिल करने के लिए जाएगा। अगर गैप फिल करने जाएगा तो हो सकता है कि 100-150 पॉइंट का भी अप मूव आ सकता है। डाउन साइड में भी काफ़ी बड़ा गैप है। अभी हम काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं एक ही रेंज में, 50 पॉइंट की रेंज में हम लोग मूव कर रहे हैं। 23,950 से लेके 24,000 तक का मार्केट उसी रेंज में काफ़ी टाइम से मूव कर रहा था। तो अगर नीचे का रेंज ब्रेक करेगा तो आज का लो टेस्ट हो सकता है, और अगर ऊपर का रेंज ब्रेक करेगा तो गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। ऑलरेडी हम 2.3% 2.5% के ऊपर बना चुके हैं अपने कैपिटल डिप्लॉयड का, तो रिस्क कम कर लिया। तो नागेश, अराउंड 9:15 जब मार्केट खुला तब मैंने यही 1800 क्वांटिटी डाली थी स्टार्टिंग में, जो कि आपको यहाँ दिखेगी 9:15:34 पे। मैंने थोड़ा स्क्यूड पोजीशन लिया, पुट 26 का था और कॉल 13 के थी। मेरा व्यू ये था कि मार्केट वहाँ से और डाउन मूव नहीं दिखाएगा, इसीलिए मैंने पुट थोड़े महंगे बेचे एंड कॉल्स थोड़े सस्ते बेचे। क्वांटिटी सेम रखी थी,
जिसका मुझे बेनिफिट मिला, तो थोड़ा सा डायरेक्शनल बेट, होपिंग कि मार्केट रिवर्सल देगा, एंड वो पे ऑफ कर गया, क्योंकि 26 रुपीज़ वाला पुट में बहुत अच्छा डीके हुआ, एंड वी हैड गुड एडजस्टमेंट्स। हमारे एडजस्टमेंट्स हुए जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया, हमारे पुट पास आते गए। तो मैं चार्ट में थोड़ा सा दिखाता हूँ। इस अप मूव में मेरे पुट्स पास आते गए, पास आते गए, पास आते गए। ऑब्वियसली मैंने स्ट्रैंगल ले रखा था, तो स्ट्रैंगल में एक लेग पुट का नीचे से ऊपर आता रहा स्पॉट के पास। जब मार्केट ने यहाँ रिवर्सल दिया, तब रफली अराउंड 10 के पास आसपास यहाँ पे मेरे कॉल्स फिर पास आते गए। एक टाइम पे आई वाज एट अ स्ट्रैडल, सो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब मैंने 10:59 पे मैंने पूरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी थी, तब मैं 23,950 के स्ट्रैडल पे था, और मैंने 1800 क्वांटिटी अपनी स्क्वायर ऑफ कर ली। तो मैं सिर्फ प्राइस डिफरेंस यूज़ कर रहा था। प्राइस डिफरेंस में हुआ ये कि मेरा मार्केट ऐसे था, मार्केट जब ऊपर गया तो मेरा पुट्स पास में आए, तो मार्केट वापस नीचे जाने लगा तो कॉल्स नीचे आए। एक टाइम पे मैं स्ट्रैडल पे आ चुका था, और जब मुझे डिसेंट प्रॉफिट दिखा अराउंड 88,000, अब रफली 90,000 टच कर रहे थे, इट वॉज अ वेरी गुड प्रॉफिट फॉर 50 लाख 51 लाख का कैपिटल डिप्लॉयड पे। अगर 90,000 मिल रहा है सुबह 11 बजे तक, तो 11 बजे मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली। ये मैं आपको पीएनएल चार्ट में भी दिखाता हूँ। ये था हमारा पीएनएल चार्ट। तो रफली अराउंड 9:15 एंट्री हुई है, तो धीरे धीरे हमने पोजीशन को मैनेज करके यहाँ पे जब हमने 90,000 टच किया, तो मेरा 90 के आसपास पहुँचा, तब मैंने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसके बाद फिर हमने लाइव जब आए हैं, तो तब 88,000 के आसपास का प्रॉफिट था। वहाँ से वी आर मैनेजिंग। एंट्री हमने स्पाइक में ली, तो ऑब्वियसली सडन मूव के कारण MTM 60 तक चला गया, बट देन वो मैनेज हो गया, एंड वी वेंट इनटू इन्वर्टेड ट्रायंगल। तब से वी आर ट्राइंग टू कैप्चर अ डिसेंट डीके। हम लोग 132 131 टच कर चुके हैं ऑलरेडी। दिस इज योर पीएनएल। ओके, ये भी काफ़ी डिसेंट डीके आ गया है। हमने 40 पे 41 पे एग्जिट लिया था, अभी 36 हो चुका है। बट वी आर नॉट लूजिंग आउट, क्योंकि हमने आधी क्वांटिटी काटी थी, आधी क्वांटिटी रखी है। अभी भी लॉजिक वही है कि अगर 57 के ऊपर जाएगा कॉल या पुट, दोनों में से कोई भी, वो लेग दूर चला जाएगा। जब वो लेग दूर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली प्राइस डिफरेंस पे ऑटो अपडेट लगा रखा है, तो नई वैल्यू कैलकुलेट होगी और प्राइस डिफरेंस हम यूज़ करेंगे उससे। अभी कॉल्स ने बहुत अच्छा डिके दे दिया है, पुट्स में कुछ राइज नहीं हुआ है, इवन एक मार्केट ने थोड़ा डाउन मूव दिखाया है। आप मैनेज कर सकते हो स्विंग्स को, राइट, डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टाइल से ट्रेड कर रहे हो। जो पीएनएल का स्विंग्स जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि कई बार मैं पीएनएल को हाइड कर देता हूँ, क्योंकि पीएनएल स्विंग्स इम्पैक्ट करता है आपकी साइकोलॉजी पे, आप कैसे ट्रेड कर रहे हो। कई बार बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा होता है तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होता है तो इराटिक डिसीजंस हो जाते हैं। ये यूज़र्स ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें पीएनएल नहीं देखना हो तो एक ऑप्शन दे दीजिए। अगर आप पीएनएल पे क्लिक करेंगे तो पीएनएल हाइड हो जाएगा। इफ आई क्लिक ऑन करंट पीएनएल अगेन, पीएनएल दिखने लगेगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरा पीएनएल देख के मेरे डिसीजंस सही नहीं हो पाते, आप पीएनएल को छुपा सकते हैं। आज के लिए RMS सेट कर देता हूँ कि अगर 50,000 का नुकसान होगा, जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एंड ऑफ द डे अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। तो अगर इतने मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, सडनली कोई न्यूज़ फ्लैश आई और पीएनएल चेक था मेरा, क्योंकि मेरा ट्रेलिंग पीएनएल है, तो अभी 60,000 हो गया। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरा ट्रेलिंग पीएनएल विल मेक श्योर कि मेरा प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो जाए। इसको अगर मैं 50,000 चेंज कर देता हूँ, तो अब वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया 85,000। तो अब 85,000 के नीचे अगर प्रॉफिट गया, तो ऑटोमेटिकली पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। मान लीजिए मुझे हेजेस रखने हैं ताकि मैं री एंट्री लेने वाला हूँ, तो मैं यहाँ ऑल के बदले ऑल सोल्ड कर दूँगा, तो मेरी जो सोल्ड पोजीशंस है सिर्फ वही स्क्वायर ऑफ होंगी, हेजेस मेरे वैसे के वैसे रहेंगे। जो बायर्स हैं
वो अगर चाहते हैं तो उनके लिए ऑल बाय पोजीशन हो जाएगा ऑप्शन। यस, 50 लाख मार्जिन फॉर टुडे ऑल्सो, यस। तो हमने 51 तक टच, मैंने इसको क्लिक नहीं किया है क्योंकि हमने 51 तक टच किया था। अगर मैं अभी क्लिक करूंगा तो ऑब्वियसली हम 25 लाख के आसपास मार्जिन यूज़ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, या 25 लाख का मार्जिन यूज़ कर रहा है। बट हमने मैक्सिमम मार्जिन जो यूज़ किया है वो अराउंड 51 लाख के आसपास था। थोड़ा बहुत मार्जिन की रिक्वायरमेंट अप एंड डाउन जाती है 1-2 लाख से, तो वो हेजेस के कारण हो जाता है कि अगर मैं हेजेस शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं हेजेस भी शिफ्ट करना चाहूँ तो मैं शिफ्ट हेजेस पे क्लिक करूँगा तो मोस्ट लाइकली मार्जिन की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम रहेगी थ्रू आउट द डे। बट अगर मैं क्वांटिटी चेंज नहीं कर रहा, तो ये ROI अभी गलत है क्योंकि मैंने 51 लाख तक डिप्लॉय किया है, तो ROI इज एक्चुअली 2.6% राइट। एंड हम 2 बजे 2:30 के आसपास अगर हमने पूरी कैपिटल डिप्लॉय नहीं करी होगी तो हम कर देंगे। अभी मैं इसको फिर से 80 कर देता हूँ कि अगर कभी स्पाइक आया तो एंट्री मिल जाए। सो प्राइस डिफरेंस ऑप्शन मैं अभी चेक कर रखे रखा है, लेकिन वैल्यू मैंने एक रैंडम डाल रखी है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि अभी प्राइस डिफरेंस किक इन हो, मैं ऑलरेडी इन्वर्टेड हूँ। प्राइस डिफरेंस क्या करता है कि जब दोनों के बीच का स्क्यू बढ़ जाता है तब वो देखता है कि जिसका प्राइस कम है उसको पास लेके आना है, बेसिकली उसको एक स्ट्राइक और क्लोजर लेके जाना है। अगर अभी मान लीजिए मार्केट और गिरता है और प्राइस डिफरेंस मेरा मीट कर जाएगा तो मैं 23,950 से 23,900 आ जाऊँगा, तो जो भी क्लोजर स्ट्राइक है एक, उस स्ट्राइक पे वो मूव कर जाएगा। अभी मैंने सिर्फ रैंडमली टिक कर रखा है सिर्फ इसी कारण से क्योंकि जब एडजस्टमेंट होगा, वो एडजस्टमेंट कब होगा, एडजस्टमेंट होगा प्राइस चेक, क्योंकि प्राइस चेक इज 57, तो पहले 57 जो भी टच करेगा वो दूर चला जाएगा। वो हो सकता है कॉल करे, हो सकता है पुट करे, जो भी करेगा जब वो दूर जाएगा तो नया प्राइस डिफरेंस कैलकुलेट होगा। नया प्राइस डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा, वो दोनों का प्रीमियम का टोटल करेगा। तो टेकिंग एन एग्जांपल, अगर मार्केट अभी नीचे जाता है और ये 57 टच कर जाता है पुट, मेरा जो दूर का पुट है उस समय ऑलमोस्ट 15 से 15 के आसपास होना चाहिए, उस समय मेरा कॉल भी 15 के आसपास होगा, तो 15 + 15 30, 30 का 40% इस 12, तो 12 रुपये की वैल्यू यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वो बिल्कुल वैलिड है क्योंकि वही चाहिए मुझे। मैंने नेक्स्ट स्टेप के हिसाब से भी प्लान करके सेटिंग रखी है। ये वर्जन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो टेस्ट वर्जन है अभी, जिसमें हम आईवी और डेल्टा भी दिखा रहे हैं। ट्रेडजिनी इज़ नाउ पब्लिशिंग हम लोग के लिए आईवीज और डेल्टा लाइव मार्केट में विद एवरी 15 सेकेंड्स के यहाँ पे। तो हर 15 सेकेंड पे मुझे लाइव आईवी और डेल्टा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट जो हम वर्जन ला रहे हैं इसमें उसको और सोफिस्टिकेटेड कर रहे हैं, जिस पे आप वीक्स के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। तो डिपेंड सर, आपकी क्या इच्छा है, राइट। आई कैन अनचेक दिस एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आई कैन यूज़, मैं सारे के सारे ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है मैं कौन से ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू ये है कि अगर मार्केट नीचे गिरा तो मुझे अपने पुट को दूर ले जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता मार्केट कितना गिरेगा, या हो सकता है कंटिन्यूसली गिरता जाए। तो अगर कंटिन्यूसली गिर रहा है तो मुझे एक और ऑप्शन चाहिए, वो है कि मेरा कॉल पास में आ जाए। मैं एक एग्जांपल की तौर पे बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट गिर रहा है तो पुट तो दूर ले गया मैं, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे कॉल को भी पास लेके आना है, तो फॉलिंग मार्केट है तो इसीलिए मैंने दोनों यूज़ करे। कई लोग कहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ दूर जाना है, जिस वांट कि भाई मेरा अगर ये 44 से 47 हो गया तो मुझे दूर जाना है, तो वो दूर जाएगा, तो आप सिर्फ प्राइस चेक यूज़ करिए। अगर आपको पास आना है दूसरी साइड से, गिरते मार्केट में कॉल को पास में लेके आना है, चढ़ते मार्केट में पुट को पास में लेके आना है, तो यू शुड यूज़ प्राइस डिफरेंस। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों को अनचेक कर सकते हैं।
कोई कंपल्शन नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं उसके हिसाब से। आई होप आपका सवाल का जवाब मिला, नहीं तो मैं कैन एक्सप्लेन अगेन अगर आपको कोई डाउट है। जस्ट वन मोर रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो। दैट गिव्स अस मोर कॉन्फिडेंस कि हम लोग जो कर रहे हैं वो लोगों के काम आ रहा है। ये अच्छा डिके आ चुका है 33। हमने 41 पे काटा था पोजीशन को आधी, पर हमने पूरी पोजीशन नहीं करी, right? ये तो वो फोमो आ जाता है कि अरे काश होता मैं पोजीशन में। हमने ठीक है, हमने मैं 8 पॉइंट, ऑलमोस्ट 12 पॉइंट मिलते, वर्ष हमें 6 पॉइंट मिले क्योंकि हमने आधी पोजीशन रखी थी, और हमने रिस्क भी कम कर लिया। ये हम काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हैं ऑलरेडी। एक बड़ा मूव हमारा प्रॉफिट ले जा सकता है। अगर आप ऑलमोस्ट 2.5% प्रॉफिट पे बैठे हैं, आप तो कैपिटल डिप्लॉयड, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है वो। हो सकता है इससे भी अच्छा लोग कर रहे हों, और काफ़ी लोग कर भी रहे होंगे, बट मेरे लिए मेरा रिस्क रिवॉर्ड कहता है कि आई शुड टेक स्लाइट प्रिकॉशन। जब मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है तो मैं वापस से स्पाइक में एंट्री ले लूँगा, मेरे पास अभी टाइम है। अगर स्पाइक आई तो विल ट्राई एंड टेक एन एंट्री एक अच्छे प्रीमियम पे। अगर कोई बड़ा मूव आएगा तो इसको हमने प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रेलिंग पीएनएल लगा रखा है जो कि 50,000 का है। तो मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट से 50,000 माइनस करके एग्जिट पीएनएल अपने आप चेंज होता है। तो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है मेरा एग्जिट क्राइटेरिया बढ़ता जाता है, ताकि अगर नाउ अगर मेरा 87,803 रुपीज़ के नीचे जाएगा प्रॉफिट, तो ऑटोमेटिकली मेरी सोल्ड पोजीशंस कट जाए, मेरे हेजेस भले ही पड़े रहे, ताकि मैं री एंट्री कर सकूँ। सर आइडियल करके कुछ नहीं है ऑनेस्टली। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं मैं रिवर्स मैथ्स करता हूँ, राइट, कि मुझे क्या प्राइस पे कंफर्टेबल होगा। मैंने अभी 40 रखा है, अगर अच्छा डीके आ गया तो मैं इसको 30 कर दूंगा या उसको 50 कर दूंगा, बट अच्छा कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है। फार्मूला वैल्यू कैलकुलेट रिवर्स करके करी जा रही है। अगर ये 7 पॉइंट मूव आया तो पुट कितने का होगा, पुट कितने का होगा, उस समय कॉल कितने का होगा, दोनों का कंबाइंड प्रीमियम क्या रहेगा, उसका कितना परसेंटेज में मैं कंफर्टेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें मेंटली हो रही है कैलकुलेट। वो मेंटली कैलकुलेशन के बाद वो 40% मेरे को कंफर्ट लगा। हो सकता है 10 मिनट बाद वो 40% कंफर्ट न लगे, क्योंकि प्रीमियम बहुत डिके हो गया है, मैं उसको 50% कर दूँ या मैं उसको 30% कर दूँ, वो डिपेंड करेगा उस समय प्रीमियम्स क्या चल रहा है। पर जो कंसेप्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे अपना पोजीशन को प्रोटेक्ट करना है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने प्राइस चेक का 57 रखा है, क्योंकि 7 पॉइंट का मूव अगर अब आएगा इसमें, मेरा यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट और देगा। अगर ये 3 पॉइंट और देता है तो ये 17 के आसपास होता है। सिमिलरली उस समय पुट भी, जिस पर मैं शिफ्ट करूँगा पोजीशन, वो भी 17 के आसपास होगा, तो मेरी पोजीशन अपने आप बैलेंस हो जाती है। मुझे एमटीएम स्विंग्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम देखने को शायद मिलेगा हमें। 57 हमने रखा था, हमने एक टिक रखा है तो वो जाके वापस आ गया। तो अगर ज़ीरो रखता तो हो जाता, 57 के ऊपर ये गया और ये शिफ्ट हो गया। तो अब आप देखेंगे, अब मेरा 12 का कैलकुलेशन था उस समय, 12 आ गया। 12 इज़ वॉट आई एम कंफर्टेबल। अब मैं प्राइस चेक को अनचेक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ,
मैं इसको अनचेक कर, अब मेरा कहना है कि अगर 12 पॉइंट्स का मूवमेंट आएगा तो मैंने सिर्फ प्राइस डिफरेंस 40% रखा था, अपने आप 12 कैलकुलेट हो गया, तो मैं ऑलरेडी नेक्स्ट क्या होने वाला है अगर होगा तो मैं क्या करूँगा उस हिसाब से मैंने ये प्राइस डिफरेंस रखा। तो अभी तो मैं स्क्रीन के सामने हूँ, कई बार मैं स्क्रीन के सामने घंटों तक नहीं रहता हूँ, तो इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नागेश जी, आई होप ये आपको लाइव में अब देखने मिला तो थोड़ी क्लैरिटी आई होगी क्यों वो प्राइस डिफरेंस रखा था। अब मैंने प्राइस चेक अनचेक कर लिया। 2 स्ट्राइक दूर की प्रीमियम्स देख रहा हूँ। अब हम टेक अ कॉल, क्योंकि मुझे अभी आप देखेंगे तो ये मुझे बता रहा है कि मुझे 26,000 मिलेंगे मैक्सिमम। 26,000 के लिए मैं ऑलमोस्ट 1.3 लाख रिस्क नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पोजीशन को अभी शिफ्ट कर लूँगा। मैं ऑलमोस्ट 100 पॉइंट दूर चला जाता हूँ। 6 रुपये 7 रुपये के आसपास का ये जो प्रीमियम चल रहे हैं, मैं इस पर चला जाऊँगा और मैं उसमें फुल क्वांटिटी डिप्लॉय कर लूँगा। तो घूम फिर के मुझे उतना ही मिलेगा। अभी मैंने हाफ क्वांटिटी डिप्लॉय करी है, तो मेरा रिस्क कम हो जाएगा और मैं जब ज़रूरत होगी तो पास आ जाऊँगा। तो अभी मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मेरे को सारी पोजीशन काट दो। अब अगर ये 31 के नीचे जाता है तो एग्जिट ऑन, ना हेजेस को एग्जिट नहीं कर रहे। शॉर्ट अभी 31 के नीचे जाएगा तो मेरी सारी सोल्ड पोजीशन कट जाती है। अब मैं स्पाइक में एंट्री लेने की कोशिश करूँगा, राइट। अभी आपने देखा कि मेरी पोजीशन सारी कट गई, सोल्ड पोजीशंस मेरे एजेस रह गए। अब मैं जो कर रहा हूँ वो है कि थोड़ा सा स्पाइक में एंट्री लेने की कोशिश। हम 2 स्ट्राइक दूर चले गए और हम कह रहे हैं कि हमें 600 क्वांटिटी 3 रोज एक एक पॉइंट के डिफरेंस पे बना के दो, तो 7 रुपये 8 रुपये और 9 रुपये पे। और पुट में भी मैं 2 स्ट्राइक दूर जा रहा हूँ, मुझे एक एक पॉइंट पे क्वांटिटी बना के। तो ये मेरे रूल्स बन गए 7.5 8.5 9.5। ये हटा दिया मैंने, यहाँ पे ये 3 है, तो मेरे को स्पाइक में मैं एंट्री लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलेगी एंट्री तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। और मैं हेजेस भी काट देता हूँ, हेजेस का क्या, हम हेजेस ऑटोमेटिकली 500 पॉइंट दूर का ले लेंगे जब एंट्री मिलेगी, प्लेन एंड सिंपल। बट इसके साथ साथ मुझे हो सकता है एंट्री मिल जाए लेकिन मार्केट ने उसमें 200 पॉइंट का मूव दे दिया, तो मैं प्राइस डिफरेंस भी रखूँगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। मैं प्राइस डिफरेंस को 50% कर देता हूँ और दूसरा मैं पीएनएल को यहाँ पे 50,000 है, ठीक है, पीएनएल को भी चेक करके छोड़। अब जब एंट्री मिली मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ, हो सकता है उस समय मैं स्क्रीन के सामने हूँ भी ना, लेकिन मैंने क्या बोला है, मुझे 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये पे एंट्री मिल जाए कॉल साइड में, पुट में 7.5 8.5 9.5 पे 600 क्वान्टिटी। जब एंट्री मिले तब साथ में मेरे हेजेस आ जाए 500 पॉइंट दूर के। मैंने प्राइस डिफरेंस का रूल ऑटोमेटिकली सेट करके छोड़ दिया है कि 50% वैल्यू का प्राइस डिफरेंस अपने आप आ जाए जब दोनों लेग आ जाते हैं। साथ में पीएनएल ऑटोमेशन लगा दिया है, मेरी सोल्ड पोजीशंस कट जाए अगर मेरा प्रॉफिट 50,000 से कम हो जाए। 87,000 है अभी, 87,000 के नीचे जनरली अगर जाएगा मेरी पोजीशन पूरी पूरी कट। तो हो सकता है मुझे एंट्री मिले ही ना, हो सकता है मुझे एंट्री मिले, बट मैं इस प्रॉफिट से बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 2.6% बन चुका है ऑफ द कैपिटल डिप्लॉय। आर्श, इट्स टू अर्ली टू से, राइट। आप अगर ये रिकॉर्डिंग देखेंगे तो स्टार्टिंग में भी मैंने इसी पे कमेंट किया था। इट्स गोना बी इवेंचुअली वी आर ऑल, मतलब हम लोग ऑलरेडी तैयार हैं। अगर हमें एल्गो आईडी टैग करके हर ऑर्डर पे भेजनी पड़ेगी तो वी कैन ऑलवेज डू दैट। इट्स जस्ट दैट क्या फाइनल रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, अगर वो अभी तो ड्राफ्ट पेपर है जिसके ऊपर उन्होंने कमेंट्स मांगे हैं, रिस्पॉन्स अगर लोगों का नहीं जाता, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे कि नहीं हमें चलेगा ये, ऑब्वियसली नॉट टेकिंग एन एक्शन ऑल्सो इज एन एक्शन। मतलब अगर आप कुछ भी उनको कमेंट ही नहीं करेंगे तो उनको लगेगा कि जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं।
अगर आपको लगता है कि नहीं इससे आपका नुकसान होने वाला है, जो इनिशियली मुझे लगता है कि काफ़ी ट्रेडर्स जो अपना खुद का एल्गो चला रहे हैं या जो अपने खुद के सेटिंग्स के थ्रू कुछ स्ट्रैटेजीज वेरीफाई कर रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा। फिर हर चीज़ें ब्रोकर को रिक्वेस्ट डालनी होगी या सेबी को रिक्वेस्ट डालनी होगी कि मेरा ये स्ट्रैटेजी है, मुझे ये रन करनी है क्या, और फिर उसके ट्वीक्स कैसे होंगे। इट्स ऑल बिग क्वेश्चन मार्क कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये, अगर होगा तो। एंड लाइक आई सेड कि अभी इसमें मुझे जो लगता है अभी काफ़ी टाइम है, नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी होने वाला हो, और शायद हो भी ना। अगर हम लोग कमेंट करेंगे सेबी के पेपर पे और बताएंगे कि नहीं ये हमें जो चाहिए, जो रिटेलर्स को चाहिए, हम ऑलरेडी एल्गो चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम एल्गो नहीं चला रहे थे। जो उनका कहना है कि हम इनेबल कर रहे हैं, जो जो न्यूज़ मीडिया जो जिसे जो पोर्ट्रे कर रही है कि दिस इज़ गोना हेल्प रिटेलर्स विद एल्गो, क्योंकि उनके पास एल्गो का ऑप्शन नहीं था, वो गलत है। हमारे पास ऑलरेडी एल्गो के ऑप्शन थे। इट्स जस्ट दैट अब हमें बहुत स्ट्रीमलाइन करके, बहुत कंप्लायंस के साथ, ब्रोकर के साथ काम करके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी किसी ब्रोकर के साथ कर रहे हैं काम, वो स्ट्रैटेजी आपको किसी और ब्रोकर पर डिप्लॉय करनी है, तो फिर क्या स्टेप्स होंगे उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। जब भी आप ब्रोकर चेंज करेंगे तब क्या होगा, आप ब्रोकर अप्रूव करेगा आपकी स्ट्रैटेजी, क्या सेबी का अप्रूवल, फिर आप डायरेक्टली उस ब्रोकर पे काम कर पाएंगे। तो आई थिंक सवाल ज़्यादा है जवाबों से, तो वील हैव टू वेट एंड। तेजस, हो सकता है दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज गोना कम आउट, बट आई डोंट नो, क्योंकि उसमें तो ये लिखा है कि ओपन एपीआई बंद हो जाएंगी। मतलब अगर आप एपीआई के थ्रू ऑर्डर डाल रहे हैं और ऑब्वियसली कोई स्ट्रैटेजी के बगैर तो कुछ होता नहीं। स्ट्रैटेजी क्या, बेसिकली स्ट्रैटेजी किसे कहते हैं? अगर स्ट्रैटेजी मतलब आप कोई रूल बना रहे हैं कि भाई मैं इसके ऊपर जाएगा तो पोजीशन ऐड करूंगा, इसके नीचे जाएगा तो पोजीशन काट दूंगा, उसको एक नाम दे दिया स्ट्रैटेजी का, तो वो स्ट्रैटेजी हो गई। नाइन कॉर्नर हो गया, बटरफ्लाई हो गया, है क्या ये सारी चीज़ें, मल्टीपल लेग्स आप एक टाइम पे एंटर कर रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, दैट्स एक्चुअली स्ट्रैटेजी। हो सकता है वो बिल्कुल सही हो, हमें पता है कि ये मैनुअली नहीं होगा, बट जैसे मैंने कहा कि सवाल ज़्यादा हैं जवाबों से। सो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, तो मुझे लगता है कि हम लोग रेडी हैं। हमें जब भी अगर जो भी कंप्लायंस के चेंजेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस आएंगे, वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली, विल मेक श्योर दैट हमारे यूजर्स जल्दी से जल्दी विद लीस्ट अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट कैन कंटिन्यू टू ट्रेड लाइक दे यूज्ड टू। पीएनएल चार्ट देख लेते हैं हम लोग। ये टस्ट 138 और हम 135 पे एग्जिट कर चुके हैं। एंट्री के रूल्स बने हुए हैं, हो सकता है हमें एंट्री ना मिले क्योंकि काफ़ी अच्छा डीके आ गया। ये अंडर 30, अभी 130 हुआ है, अभी 2 घंटे और बचे हैं, तो बहुत मुश्किल है बोलना कि क्या होने वाला है। एनी स्पेसिफिक फीचर इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज लेट अस नो। इन द मीन टाइम मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पेपर ट्रेड खोल लेता हूँ, और पेपर ट्रेड में हम चेक करते हैं कि अगर हम उस पोजीशन पर रहते तो क्या होता। जो पेपर ट्रेडिंग अभी लाइव पोजीशन नहीं है, अभी पेपर ट्रेड है। पेपर ट्रेड में मैं स्ट्रैडल ले रहा हूँ, स्ट्रैडल में 500 पॉइंट का हैश ले रहा हूँ। मान लीजिए 30 के ऊपर गया तो मैं 1800 क्वान्टिटी की स्ट्रैडल बेच सकता। ये पेपर ट्रेड इंस्टेंस है, जिस सो दैट आपको पता है कि क्या वन अगर 30 के ऊपर जाएगा तो हमें एंट्री मिल जाएगी। ये हम पेपर ट्रेड में भी कर रहे हैं, और फिर उसको देखेंगे कि क्या होता। ये लाइव है, लेफ्ट में, राइट में पेपर ट्रेड। आपको पता करना हो तो यहाँ चेकबॉक्स चेकड होता है, दैट मीन्स द पेपर ट्रेड। अगर चेकबॉक्स अनचेक्ड है तो लाइव ट्रेड।
हम इसको 29 पे ले लेते हैं। बहुत अच्छा टिके आ गया। ओके, तो ये एंट्री आ गई हमारे पास। अभी मैक्सिमम है 43,000 और मिल सकता है, बट 42,000 के लिए मैं स्ट्रैडल अभी लेने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है 230 के बाद लूँ। अभी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है अपना कमाए हुए पैसे को रिस्क पे डालने का। प्राइसिंग प्लान्स, डिटेल्स, अपडेट्स सब कुछ अवेलेबल है। इफ़ यू वांट try out 15-day, 1 month and a long term plan. We have all the videos on our YouTube, on our website as well, so with explanations, तो आपको कोई भी वीडियो के बारे में उनका एक्सप्लेनेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। And for now, TradeGenie is offering 1 month फ्री ऑन योर अकाउंट है। तो अगर आपका TradeGenie का अकाउंट है, आपको 1 महीना ट्रेडफ्लो का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे अकाउंट खोलना है, तो वी हैव शेयर्ड ऑल द डिटेल्स ऑन द चैट पे। यू कैन रीच आउट टू अस एंड वी कैन हेल्प यू विद ओपनिंग एन अकाउंट एंड यू कैन देन गेट 1 month फ्री एक्सेस। लेट्स सी, हमारी पोजीशंस जो हमने ली थी उसका हमने कुछ रूल्स बनाए थे, वो रूल्स को एक बार विजिट कर लेते हैं। इसको मिनिमाइज कर देते हैं पेपर ट्रेड को, इसको फुल स्क्रीन करके यहाँ पे रूल्स एक बार रिव्यू कर लेते हैं। 730, 750, 59, 50 एंड कॉल्स में वी सेट 7, 8, 9। ट्वेंटी 27 का हो चुका है। और एक काम करता हूँ, मैं एक रूल बना लेता हूँ ग्रेटर देन 50 का, एंड विल से सेल 600 क्वांटिटी अगर 50 के ऊपर गया। तो मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स दिए हैं, अच्छी प्राइस पे एंटर करने का इंटेंशन। एंड ऑफ द डे हमें चाहिए कि हम बेटर प्राइस पे एंटर करें, रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में हो। हम यूजिंग एक ATM स्टाइल का फीचर, एक कॉल रूल्स एंड पुट रूल्स का फीचर, और कस्टम भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। कस्टम में ये देखते हैं 400 का 7 रुपये का है, 950 का 8 रुपये का है, 15 रुपये का चल रहा है। अगर ये 18 रुपये के ऊपर जाता है तो आई सेल 600। यही चीज़ अगर 19 रुपये पे जाती है तो विल सेल और 600। लास्ट वन, अगर ये 20 रुपये पे जाती है हम और 600। तो 3 रूल बनाए। एजेस का मुझे डर नहीं है, क्योंकि एजेस ऑटोमेटिकली जब पोजीशन आएगी तब मिल जाएंगे साथ में। तो मल्टीपल ऑप्शन है ट्रेड करने के, क्या करना चाहते हैं। कस्टम स्ट्रैटेजी बन गई कि जब दोनों का कंबाइंड प्रीमियम 18, 19 या 20 के ऊपर जाएगा तो एंट्री हो जाए। कॉल रूल्स हमने बना दिए 7, 8, 9 के। पुट रूल्स बना दिए 7.5, 8.5, 9.5 के। और ATM स्ट्रैडल पे भी हमने एक लॉजिक लगा दिया कि 50 के। सो अब क्योंकि हम अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हैं, हम अच्छे टाइम पे घुसने की कोशिश करेंगे। अगर एंट्री मिली तो बहुत बढ़िया, नहीं मिली आज के लिए 2.5%, 2.6% इज़ मोर देन इनफ फॉर मी टू कॉल इट अ डे। सर कोई इंटेंशन नहीं है अभी पेपर यूसेज का, बल्कि
कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी ब्रोकर्स का इंटरेस्ट है, तो अगर हम broker is willing to pay for your subscription, we will try and get that option ताकि आपको अपने ब्रोकर के थ्रू ही ट्रेड को सब्सक्रिप्शन मिल जाए। फ्री से अच्छा और कुछ नहीं रेट। बट इफ़ यू बीन फॉलोइंग अस, अगर आप हमें 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस जर्नी को, तो बहुत कुछ ऐड हुआ है सिस्टम में, बहुत सारे फीचर्स ऐड हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई है, थैंक्स टू द फीडबैक जो हमें कम्युनिटी से मिला, जो सपोर्ट हमें कम्युनिटी से मिला है। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि सब चीज़ के लिए वी हैव टू शेल आउट मनी। भी हम लोग इंडिविजुअल सर्वर्स देते हैं, राइट। आपका इंडिविजुअल सर्वर की कॉस्ट इंक्लूडेड है सब्सक्रिप्शन प्लान, तो यू डोंट हैव टू हैव सर्वर। वो सर्वर का काफ़ी फ़ायदे हैं। आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया, आपका इंटरनेट चला गया, आप ट्रैवल कर रहे हैं, योर रूल्स आर रनिंग ऑन अ सर्वर जिसका डेडिकेटेड पावर, डेडिकेटेड इंटरनेट है। यू डोंट हैव टू वरी कि भाई मैं डिवाइस चेंज कर रहा हूँ तो मुझे क्या इस डिवाइस से उस डिवाइस पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेरा कंप्यूटर चोरी हो गया तो क्या मेरा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और आपका शेयर्ड रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप जिस कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं उस पर किसी और का भी एक्सेस है, तो आपकी अकाउंट की सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने इंडिविजुअल मशीन्स दे रहे हैं। इंडिविजुअल मशीन्स पे आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है और वो एक्सेस आप ही के पास है, तो आपकी सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, वर्स्ट केस सिनारियो ऑफ पावर आउटेज, इंटरनेट, यू ट्रैवलिंग एंड यू वांट टू यूज़ फ्रॉम अ डिफरेंट मशीन, आपको मोबाइल से करना है, टैबलेट से करना है, लैपटॉप से करना है, कैन यूज़ इट फ्रॉम एनी डिवाइस, मैक पे एक्सेसिबल है। ओके, लेट्स लुक एट मार्केट में कुछ हो रहा है क्या। अगर मार्केट में कुछ हो रहा है तो हम काफ़ी अच्छी रेंज बाउंड में बैठे हुए हैं अभी। ये वेबसाइट है tradeflow.in, so if you search for tradeflow.in, first tradeflow.in आएगा, tradeflow simplifying trading, this is the home page। यहाँ पे different plans available हैं। let's go to Nifty 50 and see Nifty 50 is pretty much range bound। ओके, हमें एंट्री मिली, लेट्स सी क्या एंट्री मिली। ओके, तो वी गॉट एन एंट्री ऑफ 600 क्वांटिटी। किस कारण से मिली, लेट्स चेक। हमें मिली है कस्टम के कारण, क्योंकि लेग में स्पाइक आया और प्रीमियम्स 18 के ऊपर चले गए एंड वी गॉट एन एंट्री। एक बार हमें 18 पे, एक बार हमें 19 पे। तो दिस इज़ द पावर ऑफ टूल्स। मुझे हेजेस अलग से लेके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हेजेस अपने आप आ गए उसमें। और आप ATM स्टाइल देखोगे तो 30-31 गया है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं। इस टाइम पे मैं कॉल रूल्स में कुछ करने की ज़रूरत है क्या, कुछ नहीं है। इट इज़ क्लियर एंड हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं 200 का कितने है, 1200 है, 1800 तक का लेना है मुझे, 600 क्वांटिटी का और है। लेट्स डू दिस एंड पुट में भी हम क्वांटिटी का 3 है, एक पॉइंट। तो 10:30 पे, 11 पे, 12:30 पे, और यहाँ पे हमें 8 पे, 9:30 पे, 10:30 पे, और एंट्री मिलेगी अगर हमें चाहिए। प्राइस डिफरेंस ऑटोमेटिकली 8 पॉइंट पे आ चुका है, क्योंकि मैंने 50% रखा था। मैं 150, 950, 400, ठीक है। बट मैं एक और चीज़ करूँगा कि अगर 50 के ऊपर चला गया तो आई विल एग्जिट आउट। अगर 50 के ऊपर जाता है तो आई एम गोना एग्जिट आउट माई पोजीशन, मुझे उससे ज़्यादा और नहीं करना। आई थिंक दिस इज जस्ट टू शो कि आपके पास कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप क्या करना चाहते हो उसके ऊपर। मैं चाहता तो स्पॉट रूल्स यूज़ कर सकता था कि अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया,
सपोर्ट को ब्रेक किया तो मैं कॉल्स बेचूंगा, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो मैं पुट्स बेचूंगा, ऊपर चढ़ते मार्केट में मैं पुट्स बेचूंगा, नीचे गिरते मार्केट में मैं कॉल्स बेचूंगा। मैं ये स्पॉट रूल के थ्रू कर सकता था। ऑब्वियसली हमने अभी 30 लैक्स तक डिप्लॉय किया है बस, और मुझे 16,000 मिलेगा मैक्सिमम। ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड बहुत स्क्यूड है, इसीलिए हम बहुत केयरफुल खेल रहे हैं। केयरफुल खेल रहा हूँ मैं थ्रू एटीएम स्ट्रैटेजी के थ्रू। थोड़ी क्वांटिटी ऐड हो जाएगी अगर इसको 1150 पे लेते हैं, जल्दी मिलेंगे। तो 2 पॉइंट कर रहा हूँ, 12, 14 एंड 16 पे लूँगा। कॉल में भी मैं तो क्लियर करके 2 पॉइंट के डिफरेंस पे लूँगा, 950, 1150 और 1350। 200 क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ एक साथ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं कर, बिकॉज क्लियरली अभी इंटेंशन इज़ नॉट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, इज़ टू प्रोटेक्ट एंड मेक लिटिल बिट मोर। थोड़ा सा ज़्यादा और मिल जाए, हो सकता है हम 1.5 लाख के आसपास पहुँच जाएंगे तो 3% हो जाता है। 3% 50 लाख पे इज़ 1.5 लाख, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। बट मैंने ऑब्वियसली अभी पीएनएल भी लगा रखा है 50,000 का, ताकि कभी बहुत बड़ा मूव आया तो मैं अब 89,110 के नीचे ऑटोमेटिकली पोजीशन काट दूंगा। साथ में मैंने प्राइस डिफरेंस लगा रखा है ताकि अगर मूव आया कहीं तो पोजीशन ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी हो जाए। अभी सर हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है, हम लोग ने काम चालू ऑलरेडी कर दिया है। वी विल कीप यू पोस्टेड जब वो रेडी होगा। ऑब्वियसली ये टूल बना था आज से 4 साल पहले, इस पे काम चालू हुआ था। हमें यूज़र्स को 2 साल से अवेलेबल है ये, इट्स बीन ओवर 2 years नाउ। और उसके पीछे लॉन्च करने से पहले इसमें कम से कम 1.5 से 2 साल का काम हुआ था। उसमें बहुत अच्छी टेस्टिंग हुई थी, काफ़ी सारा अलग अलग सिनारियोज में अलग अलग ब्रोकर्स के साथ अलग अलग लेवल की, डीप लेवल की टेस्टिंग हुई। उसके बाद उसको लॉन्च किया गया, क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व है। सो बन जाने के बाद भी हमें इसे काफ़ी टाइम तक खुद के पैसों पे ट्रेड करके टेस्ट करके फिर आपको लॉन्च करना होगा, तो उन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। बट वी विल कम आउट विद अ वर्जन फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हमारे चैनल को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस बाय लाइकिंग दिस वीडियो, ताकि हम जब भी कुछ भी नया फीचर लेके आएँ, कभी भी लाइव आएँ, कभी भी किसी और मार्केट के लिए या किसी और ब्रोकर के लिए इंटीग्रेट करें, या कोई ऑफर्स आ रही हैं, तो यू विल गेट नोटिफिकेशंस एंड आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो कमेंट सेक्शन में यू कैन लेट अस नो, आप कुछ स्पेसिफिक देखना चाहते हैं, एनीथिंग दैट यू थिंक इज दैट वी शुड बी डूइंग। हमारी नई प्लेलिस्ट अगर आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो वी हैव स्टार्टेड। आपको रोज़ अभी एक एक दो दो नोटिफिकेशंस आने लगेंगे, रोज़ 1 से 2 वीडियोस लॉन्च हो रहे हैं, नया कंटेंट आ रहा है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द मार्केट बेटर, टू हेल्प अंडरस्टैंड द टूल बेटर, ताकि आप हर सिचुएशन में, हर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग में इसको यूज़ कर सकें। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वी हैड अ वेरी गुड रन सो फार। ये है हमारा पीएनएल चार्ट। मैंने 9:15 पे स्ट्रैंगल से चालू किया था, अराउंड 10:30 के आसपास वी हैड रीच्ड अ स्ट्रैडल, एंड अराउंड 11 जब वो स्ट्रैडल
बेसिकली पोजीशन से हमें ऑलमोस्ट 90,000 मिल रहा था, तो हमने अराउंड 11 ओ क्लॉक पे स्क्वायर ऑफ करके पोजीशन ही स्टार्टेड टेकिंग न्यू पोजीशन। जब हम लाइव आए 11:30 पे हमने फिर से नई पोजीशन बनाई और टू रूल्स, उस पोजीशन को हम स्लोली मैनेज करके we again took some profits and roughly here around 1,32,000, and then फिर हमने फिर से रूल्स के थ्रू एंट्री ली है and we've touched almost 1,40,000 with smaller quantity। so far हमने आज दिन में 51 लाख से ज़्यादा डिप्लॉय नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ 30 लाख डिप्लॉय करा, बट हमने रूल्स बना के छोड़े हैं ताकि कभी स्पाइक आया, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो वी विल बेनिफिट फ्रॉम दैट। प्रॉफिट्स को बचाने के लिए हमने ट्रेलिंग PNL यूज़ करा है कि 50,000 तो 89,230 के नीचे अगर प्रॉफिट गया तो पोजीशंस ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाए। सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए मैं शायद आऊँ, आई हैव अ फ्यू अपॉइंटमेंट्स, तो अगर वो 11 बजे से पहले फ्री हो गया तो आई विल ट्राई एंड कम फॉर सेंसेक्स एक्सपायरी। बट नो प्रोमिस, कोशिश करते हैं। बेसिकली डिपेंड करता है कैसा सपोर्ट मिल रहा है, कैसा फीडबैक मिल रहा है। फीडबैक बहुत अच्छा रहा, काफ़ी लोग चाहते हैं आना, तो वी विल डेफिनेटली कम। अगर इसीलिए वी आर टेलिंग पीपल की फीडबैक ज़रूर बहुत ज़रूरी है। आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करता है लाइव आने की। वे यू कैन गिव अस फीडबैक इज like this video, share it with your colleagues, share it with your friends जो ट्रेडर्स हैं। ट्राई करने में आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, आप ट्रेड जीनी के थ्रू एक अकाउंट खोल सकते हैं। यू कैन ट्राई आउट फॉर अ मंथ और उसके बाद डिसाइड करें कि इज़ इट वर्थ इन्वेस्टिंग मनी इन दिस टूल। ओके, मार्केट में ऑब्वियसली कुछ खास मूवमेंट नहीं है अभी। वी आर इन अ वेट एंड वॉच with a small quantity. I'm going to take a 10-minute break again, maybe 15 minutes break again, and जाने से पहले we'll just review कि हम कहाँ हैं, कैसे हम बचा सकते हैं अपने आप। कॉल्स में हमने 600 क्वांटिटी ऐड करेंगे, 950, 1150, 1350, परफेक्ट। कुछ में हम लोग ऐड करेंगे 12, 14 एंड 16 पे। स्क्यू थोड़ा डाउनवर्ड्स है ऑलरेडी, तो दिस इज फाइन, ठीक है। कस्टम रूल्स में हमारे पास एक और एंट्री बची है 20 पॉइंट्स पे। 600 क्वांटिटी हो सकता है 20 पॉइंट्स पे यहाँ मिल जाए हमें। पहली एंट्री 18 पे, दूसरी 19 पे और तीसरी हमने 20 पे बना रखी थी। 20th की नहीं मिली ऑब्वियसली क्योंकि 19 के बाद वहाँ से डिके वापस आ गया, बट हमें ओवरऑल एंट्री 4 पॉइंट के बेनिफिट पे मिली और 3 पॉइंट के बेनिफिट करंट। तो इसको मैं हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है अभी। स्ट्रैडल में हमने बोल रखा है कि अगर स्ट्रैडल का प्राइस 50 के ऊपर चला जाता है तो मैं सारी पोजीशन एग्जिट हो जाऊँ, विच इज़ फेयर एंड गुड इनफ। और मेरे पास PNL का ऑटोमेशन भी डला हुआ है, इस कि अगर 89,000 के नीचे चला जाऊँगा तो पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। एडजस्टमेंट्स के लिए मैंने प्राइस डिफरेंस कर रखा है कि अगर नीचे का मूव आया तो कॉल पास आ जाएगा। 8 पॉइंट्स क्यों रखे हैं, अभी ऑलरेडी 4 पॉइंट का डिफरेंस है। 4 पॉइंट के डिफरेंस के लिए पुट को ऑलमोस्ट 13 जाना है और कॉल को ऑलमोस्ट 8, सो सॉरी 4, सो तब जाके मेरे पास 4-5 पे आ जाएगा। 13 तो नहीं जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा, बिकॉज अगर ये 12 पे आया तो ये ऑलमोस्ट 4 के आसपास आ जाएगा, तब मेरा एडजस्टमेंट हो जाए। अगर ये 4 पे आता है तो मेरा क्लोजर स्ट्राइक विल बी अराउंड 11 एंड 11 मेरी बैलेंस हो जाएगी, 11 एंड 12 मेरी बैलेंस हो जाएगी। So this looks good. Okay, with all this I can now go and take a break. So 15 minutes break.
Nothing major has happened so far. Let's just review. I'm running a test version right now. जिसमें आपको IV और डेल्टा भी दिख रहा है. Let's keep the call once again. Straddle is now 23. कुछ नहीं करना straddle में. Good enough. 2 बज गई है. 2:30 के आसपास हम लोग देखेंगे कि हमें क्या और पोजीशन डालनी है. अभी we are using only 30 lakhs. So far we've used up to 51 lakhs of the total margin available. उस पर we made roughly 2.5%, upwards of 2, approaching 3%. ये मैं ऑटोमेटिक रूल क्रिएशन यूज़ करता हूँ. तो मैं 200 क्वांटिटी के 3 रूल बना रहा हूँ. ऑफ 1 रुपी. यहाँ पे 1 रुपी है और यहाँ पे 2 रुपीज़ है. तो यहाँ पे भी 2 कर देते हैं. 10, 12 और 14. तो अगर मार्केट में कोई मूव आया तो हमें एंट्री मिलेगी. नहीं आया तो वी आर हैप्पी. हम लोग 3% टच कर जाएंगे क्योंकि हमें 12,000 रुपये मिलेंगे. दैट गिव्स अस roughly 3% ऑफ द मैक्सिमम कैपिटल डिप्लॉयड. इसलिए अभी तो मैंने सिर्फ 30 लाख डाले हैं, लेकिन मैं ओवरऑल जितना मेरा मैक्सिमम कैपिटल डिप्लॉयड हुआ था आज, उसका अगर काउंट करूँगा तो इट विल बी अराउंड 3%. मुझे टीम ने कहा है सर बार बार याद दिलाइए. देयर वर 50+ यूजर्स वाचिंग एंड वी स्टिल ओनली हैव 10 लाइक्स. तो अगर आपको अच्छा लग रहा है द कंटेंट दैट वी आर प्रेजेंटिंग, प्लीज़ डू लाइक वीडियोस so that we can come in the search results where people can get benefited from the tools and we can grow along with you. If you haven't liked the video yet, please do support us by liking, sharing and commenting so that we can reach to more and more users. Okay, मार्केट पूरा कंसोलिडेट कर रहा है तब से. आई थिंक हम लोग 50 पॉइंट की रेंज में तब से मूव कर रहे हैं. आई थिंक ऑलमोस्ट फॉर ओवर 2 आवर पीरियड. ये पेपर ट्रेडिंग इंस्टेंस था, इसको मैं बंद कर देता हूँ. लेफ्ट में डॉक करके वी विल सी अगर मार्केट में कुछ मूव आता है.
Nothing so far. Let's wait and watch. See if it's worth adding more to the quantity. The और 20 मिनट बाद we will evaluate कि हमें और पोजीशन ऐड करनी है तो कैसे करनी है. If I look at the payoff graph, make maximum of this, right? Because decay हो चुका है, तो 51 on the current position. Sell price and so the average price is 24 and 23. So telling me what is the maximum based on the average price. So in steady, we are approaching 3% for the day. The straddle is currently at 21 points. Inverted, then it's a huge skew. So no point here. If I look at inverted in this, then 68, and we go completely inverted with this, then 8 points versus a triangle which is 411 points. So I'll rather stay in a triangle right now because there is 11 points here. We have to look into this test version that we have deployed. I'll basically see if I can go back to the original version. Hardly anything left right now in the market. I think I'm gonna just exit this. Don't see any point because one move could brutally hurt the position. So what I'm gonna do is I'm gonna just move this and move to just no point in doing something which could hurt you more than what you can make. That's all. We keep it like this and look at the rules of trade with the quantity.
We'll exit everything if we touch 3%. 3% for a day is pretty good for me. I'm okay. I'm not okay to take more than that. We got one entry at 5 rupees here. The current value is 6,000 more. Almost 150 is possible if we add some more quantity. It's possible when it goes to 350, 455. I'm gonna change this to 25,000 or maybe 30,000. It's 113. The moment I change it to 30,000, you can see that the value changes to 1,13,000. Now with every 1 rupee increment here, exit gain and will trade. Because the risk reward is not in my favor anymore. We still have an hour 20 minutes, or 10 minutes. Well, it's now around 18, 19 points.
ಇದನ್ನ ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟಂಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಭಾಳ 3 ಫ್ಲೋರ್ ಭಾಳ ಐತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ತಾವೆ ಬಿಡಿ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಪ್ಲೈ ಇರ್ತದೆ.
Straddle is now at 14 points, right? 13, between 13 and 14. Very tricky call to take now, because let's say if we for 13 points, it's going to be okay, we'll see. So far, no change in the stance. It stay as it is. I'm not taking any more positions as of now. If there's something that I feel, I will immediately take an entry.
Okay, so I exited all the positions because the risk reward was not at all in my favor. I'm sitting with almost 3%, so I'm not gonna risk it all, but I'm gonna take an entry if there's a spike. तो कुछ चीज़ें करी हमने हमने काफ़ी रूल्स बनाए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 रुपये से लेके 23 रुपये तक के 200 क्वांटिटी की अगर कोई बड़ा स्पाइक आता है तो उसमें एंट्री लेने का फ़ायदा। सेम ऑन द कॉल साइड पे भी इसको क्लियर करके वापस से बना देता हूँ। ऑल द वे फ्रॉम 7.5 रुपये से लेके 26 रुपये हटा देता हूँ 24 तक, क्योंकि प्राइस चेक 25 का रखा है तो उसमें हमें एंट्री मिल सकती है, बस 200 क्वांटिटी की है। P&L चेकड है 30,000 का, तो कभी ज़्यादा भी हुआ, कोई बहुत बड़ा मूव आया और नुकसान भी हो रहा हो तो 1,16,000 के नीचे जाएगा तो अपने आप कट जाए पोजीशन। ऑब्वियसली एवरेजिंग चालू होने में सिर्फ 10 मिनट बची है, तो बहुत मुश्किल है ये एंट्री मिल जाए, लेकिन अननेसेसरी एंट्री नहीं लेंगे, हम एंट्री से स्पाइक में लेंगे। कस्टम में बता देता हूँ, अब नहीं चाहिए इनको, कस्टम में कोई फ़ायदा नहीं है। ये ठीक है, कस्टम में हमने स्ट्रैडल को 12, 13, 14 और 15 पे, ठीक है। फिर प्राइस चेक है, प्राइस चेक भी मैं चेक करता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे 20 के ऊपर नहीं लेंगे, 19 तक रखते हैं, बस इतना काफ़ी है।
Any suggestions, any ideas? If you were in my place, would you take a trade? Yes or no? Yeah, I think it's not advisable to take a trade here, obviously with the premiums that we see. It's just that I'm taking an entry only when there is a spike. So I will not be not just taking an entry right now, and we'll see if we got another at 550. Obviously, the risk reward is way off, but we are adding only small quantities. We're not adding too many quantities unless we see. So the only reason of doing this is a lot of times what we've seen is one big green candle and then a full reversal from there. To most likely benefit from that. If it happens, only then we're taking it. So we're adding more on spike, both on call and on put. So 3 more minutes left. And we have a tight stop loss, right? So we basically said, okay, 30,000 is what we are willing to risk. Then maybe roughly around 25,000 to be made extra if we get a decent entry. And if we don't get any entry, that's good enough. No worries. Really satisfied with the result out with the outcome so far. But any other person who thinks it's a good idea to take a trade right now? Anybody on the chat who says they will take a trade right now? And if so, would love to hear why. Especially if you were sitting at 3% profit.
2 more minutes into averaging. I'm going to take one leg so that I can look at the prices for a better understanding of what is going on. I'm going to hide the current value. You can see the deep in the money options. Again. Okay, 1 more minute into averaging. We got at 4 rupees. We got at 450 in that sudden spike. That is the reason why I do this. That it's possible to get entries at a better price. Okay, so we are into averaging now. Just clean this up. Just do 400 quantity and 3 here. It's so easy to basically create routes and so this right here becomes 8, 7, 9, 2, 8. That's not gonna happen. That's expired. Another at 6. 6. Yeah. Now we can get one more. Okay, I'm doing a testing version, right? So I have a test version which has some features and looks like we have an issue in the test version. So I'm just being very careful now. 400.
quite a lot of quantities now. So on the calls, we did get quite a lot of quantities here in the yeah, I'm sure under the limit bar, and we'll make it 5. That's the risk that I'm willing to take. That's it. Because the up move continues for 10 ticks. Okay. So it looks like it continues above, then I will be exiting. There's no point. 9 is what we've set for 10 ticks. It's not worth the risk then. Really, I can get this for 152. This is good enough. So if the market goes down, only then this averaging will come to, only then the calls will benefit. So just checking it even happens. That's the point. Don't think so it's gonna happen, but still, one big red candle can give us 1 rupee. That's it. I'm just squeezing the last bit. Usually I would not do this, but it's okay. It's okay. Not too much to risk. I have a weight of 0 now. If it touches 9, it will exit. Just do an exit. There's no point shifting. So we're risking somewhere around 7 to 8,000 for 8,000 profit.
Okay, so we've almost done for the day. I don't think so there's anything more right now for me to do. 6 rupees, 7. Nine out of 10 times we will see a red candle. Because usually they would prefer ending the market right at the minute. Okay, so we touched the 3% mark. Okay, last but not least, we had a very good viewership today, but if you haven't liked the video yet, haven't subscribed to our channel, please do so. We are coming with a lot more content. I'm doing live trading on my account in the live market, explaining how I use the tool. Hopefully it's benefiting at least few individuals, if not all. I hope to continue doing this if there's a value in doing this live. So, and the only way you can tell us is through being a brand ambassador by telling us whether we are in the right direction or not. Okay, average is coming around 3. That's what the synthetic future is also telling, and that's what the average is currently coming to, 23,953. We need to see a 10-point red candle now for us to end right at the middle. What I'm going to do is I'm going to just create a call rule. I'll say when it's greater than less than 3, I want to buy 400 quantity, and that's it. That's I'm buying back at 252 and at 150. I'm not going to wait to see the last penny. I'm going to just exit. So the way I took an entry, I'm also taking an exit through a rule where it says if it goes to below 250, exit. So it did an exit of 400 quantity. I'm going to exit if it goes to 2 and then exit some more. So let's do one more. So it works both ways, right? So on a single click, I created 3 rules to square off my positions also. Not waiting for the last 2 rupees also. Okay, let's see if there's any questions. Yeah, I would never do a hero zero here. I think I'm not. I would rather make another. So we made around what, 5,000. I'm okay with that 5,000. It's just my way of. I don't know how much profit I'll make, right? So I need to know how much I can make. If I don't know that, then it's very difficult for me to trade. I'm going to do 700 here and 700 here. We are, yeah, 1,400, right? So last, we're done with the trade. Just make it 6 and 6, just in case if there's a flash crash, we know we will exit. It goes below. So should cover charges as well, and a good 3% on the capital deployed. Got puts at 75 again. Well, that's nothing else. It says less than 0.25. Then we buy 1,800. Okay, just one last lucky reminder. If you haven't commented, liked, please do so. Please subscribe to our channel. TradeJini is currently offering a 1-month free subscription of TradeFlow if you are opening an account or if you are an existing user as well.
They will cover for us 1 month subscription charges. We will try to come tomorrow. If you are an existing user, we have all the pricing, or if you're interested and if you're not with TradeGenie, you're with any other broker, our pricing details are on tradeflow.in. The link of the website is in the chat. Okay, so the calls exited at 150, and now it's the time for puts to exit. Let's just square off our hedges here. Clear all rules, keep call, and keep this exit. Like I said, we wanted a 10-point candle on the downside. It did come in. We may eventually end up right at the center. If I look at deep in the money options also, they are telling me that the puts are roughly going to be at 0. So we will most likely close this at 25%. That gives us 1,54,000. On a capital deployed, maximum capital deployed was roughly around 51 lakhs. That gives us over 3% in the Nifty expiry. No sir, there's nothing as such as of now. If something comes up, we will definitely let you know. As of now, there's nothing planned at this point. Okay, so this needs to go worthless, which it will pretty much happen in one small green candle. I'm gonna make this as 3. It's not over till it's over, right? So you don't know, there could be another 200-point candle. Let's look at our P&L chart. Looks beautiful, right? We started with 0, no overnight positions. I don't think so. We went negative for maybe a minute or two. Nothing more than that. We took an exit around 88,000. We said, okay, I had some plans, so I had to make sure that I don't leave the position open. And then we took an entry in live market around 11:30. From there, we've been managing it. We took an exit around here at around 130, 1,30,000, 1,33,000 to be precise. And then took a small entry again, went all the way up to 1,40,000 and change. From there again took an exit, created a rule, and took an entry again to cross the 3% mark, which was 1,50,000. So looks like it's ending right at the center, and let's just square up. So we have a completed order of 134, obviously because I've exited, entered, and an ROI of upwards of 3% on the capital deployed, which was roughly 51,000. 51 lakh. If you liked what we've shown today, please do like the video, and we'll try to come tomorrow for the Sensex expiry. We'll try and cover the Sensex expiry today if time permits. Just a summary of how I took the trades since morning. So I'll just show my order book as well, and we'll show the same on the broker terminal as well. So this is the broker terminal. There's the TradeGenie. We'll look at the positions. Let me just refresh. Yeah, this is HDFC. We're not looking at HDFC. We're looking at Nifty. We'll close to Nifty. We did 1.54 lakh. Okay. We will look at the order books. So the order book will reflect exactly what we've shown. So entry was at 9:15:34 second. Same is visible here on the trade. So these were before order. I was just trying something out, and then right here we took a slightly skewed position, a triangle with calls at 13:30 and puts at 26:09. We managed it such that by the time I exited the position, I was sitting at a straddle right before 11, a straddle of 23,950. I was using price difference throughout that 1.5 hour, almost 1 hour 15 minutes. Took an exit here, and then in the live we started trading
We took a straddle again. From there, we were managing a straddle, went to inverted triangle. We used some of the features like custom strategies with rules, where we took entry when there was a spike. We created some rules to enter calls in a spike and puts on a spike. We used add hedges to add hedges only when the position is entered. I also used ATM straddle, where we looked at if the premium is below a certain level, we'll square off half of our position. So we use that as well. And we were using PNL to protect our profits by trailing the PNL from 75,000 to 50,000 to 30,000 towards the end. That covers pretty much all the features along with price check and price difference that we used. If there's anything specific that you would want us to cover, please do let us know in your comments. You can reach us on our WhatsApp numbers. We are available to cover all the features, anything that you would like us to cover in these live sessions. Thank you so much for watching. I hope you had a wonderful expiry session today. It was pretty much a calm market, nothing, not too aggressive for the standard that we've seen lately. So far, the position and the PNL is matching what we have shown on our platform. Thank you so much, and we'll see you next time. Thanks for watching. Have a good day. Take care.